Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. There is an English for grade 5. We are learning unit number 8, Major Raja Aziz Bhatti Shaheed. Yes, my dear teachers, I have divided this lesson according to this lesson plan, according to these lectures. So our lecture number 1, under the title of grammar, we will learn about simple present and present continuous tense, and we will cover up page number 73. Lecture 2A, under the title of grammar, use of possessive pronouns. We will learn that about possessive on page number 75. Lecture 2B, under the title of grammar, past tense verbs, regular and irregular verbs, and we will cover up page number 75, past tense verbs. Yes, my dear teachers, and lecture 3, under the title of pronunciation skills, we will learn about trigraph, and we will do question number 4 given on page number 73. And in lecture number 4, we will learn about reading and comprehension, and we will cover up page number 71. In lecture 5, listening and speaking, we will learn how to introduce self and others. And we will cover up page 73 and question number 12. And under lecture number 6 is there, reading and writing. We will cover up question number 12 and question number 11 given on page number 77. Yes, my dear teachers and my dear students, so we are going to start our lecture now properly. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, Surah Al-Baqarah, verse number 154, and do not say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather, they are alive, but you perceive it not. Yes, my dear students and my dear teachers, this beautiful verse is telling us about those people got martyrdom in the path of Allah. So in this beautiful verse, Allah is also guiding us that we should not say them that they are dead, they are alive, but we cannot consider, we cannot perceive it that they are alive. So we must not say them that they are dead. Yes, my dear teachers and my dear students, unit number 8 and Major Raja Aziz Bhatti Shaheed. Theme of this lesson is patriotism, national pride. And sub-theme of this lesson, exhibiting patriotism through deeds. Yes, so what is theme? Theme is that how we can love to our country and how it is. And sub-theme is also showing that it's not just verbally we will say that we love our country, we can sacrifice, we can do that. So it's also that we have to show this patriotism like with our deeds. Practically we have to show that. Yes, my dear students, open book, page number 71. Major Raja Aziz Bhatti, 1928, September 12, 1965, was a Hong Kong born Pakistani. तो मेजर राजा अजीज भट्टी कब पैदा हुए? 1928 में, सितंबर 12, 1965 में उनकी डेथ हुई। 1965 में उनकी डेथ हुई और 1928 में वो पैदा हुए। वाज अ हांगकांग बॉर्न पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, हांगकांग में पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन हांगकांग इन 1928, वो हांगकांग में 1928 को पैदा हुए। ही मूव टू पाकिस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड सेटल्ड इन लादिया, गुजरात। वो पाकिस्तान आज़ादी 1947 में आज़ाद हुआ मुल्क हमारा पाकिस्तान, तो आज़ादी से पहले ही वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर आए थे और कहाँ रहे? लादिया, गुजरात में। There he was recruited with the newly formed Pakistani army and was commissioned to the Punjab regiment in 1950. और वहाँ उन्होंने क्या किया? नई पाकिस्तानी फौज को, नई पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया। वहाँ जाके अपना चार्ज संभाला और पंजाब रेजिमेंट में 1950 में जाके अपना चार्ज संभाला। He was a brilliant officer throughout his career and stood out in his class.
वो अपने कैरियर के बहुत ही ज़हीन तरीन इंसान थे और ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स थे और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे. He did very well at the academy and was awarded the Sword of Honor and the Norman Medal. तो वो क्या थे? He did very well at the academy. उन्होंने एकेडमी में बहुत ही अहम किरदार सर अंजाम दिया and was awarded the Sword of Honor. और उनको ये एक बेटा Sword of Honor क्या है? एक खिताब है, एक एजाज है जो दिया जाता है किसी भी अच्छे या हाई रैंक के काम पे इंसान को दिया जाता है. एंड द नॉर्मान मेडल, 2 मेडल उनको मिले उनकी अच्छी कारकर्दगी और आला कारकर्दगी के बिना पर. ही वॉज बेस्ट इन हिज ईयर्स बैच ऑफ 300 ऑफिसर्स. 300 ऑफिसर्स में से वो अपने साल के बहुत ही ज्यादा बेस्ट इंसान थे. ही रिसीव्ड हिज ऑनर्स फ्रॉम रियाकत अली खान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो बेटा हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले वजीर आजम लियाकत अली खान थे और उन्होंने ही इनको, मेजर राजा अजीज भट्टी को, ये सारे ऑनर खुद अपने हाथों से दिए थे. अजीज वॉज पोस्टेड इन द बर्की एरिया ऑफ द लाहौर सेक्टर. अजीज को कहाँ भर्ती किया गया था? लाहौर सेक्टर के बर्की एरिया में पोस्ट किया गया. ऑन September 6, 1965 as the company commander, Major Bhatti chose to stay with his forward platoon. On September 6 सितंबर 1965 को इसे बर्की एरिया में पोस्ट किया गया. तो राजा अजीज भट्टी शहीद ने अपने आप को अपनी फॉरवर्ड प्लेटून, अपने आगे वाले दस्ते के साथ रखना पसंद किया. He faced continuous guns and tank attacks for 5 days and the nights in the defense of the Bamba Wali Ravi Bednia BRB Canal defense. तो इस डिफेंस में, इसकी हिफाजत के लिए राजा अजीज भट्टी ने मुसलसल 5 दिन और रात इसके लिए क्या फेस किए? कॉन्टिन्यूअस गन्स एंड टैंक अटैक्स, मुसलसल गोलियां और बारूद और गोलाबारी को फेस किया. द फायरिंग वेंट ऑन फॉर डेज एंड वंस हिज कमांडिंग ऑफिसर एडवाइज्ड मेजर भट्टी टू टेक अ लिटिल रेस्ट while another officer will take his place during this time. मुसलसल इसके बाद जैसे ही मुसलसल ये गोलाबारी होती रही तो उनके दौरान मेजर राजा अजीज भट्टी के कमांडर, उनके लीडर ने उनसे कहा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आपकी जगह कोई और कमांडर ले लेगा. लेकिन क्या हुआ? बट मेजर भट्टी रिफ्यूज्ड एंड सेड, मेजर भट्टी ने क्या किया? इनकार कर दिया. एंड सेड, और कहा दैट ही वुड नॉट स्टॉप and shed the last drop of his blood in defense of his country. वो नहीं रुकेंगे और अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बहा देंगे. 6 days later, 6 दिन बाद, मेजर भट्टी was hit by an enemy tank shell and embraced martyrdom on September 12, 1965. 6 दिन बाद मेजर राजा अजीज भट्टी को एक दुश्मन के टैंक से एक गोले ने हिट किया और उन्होंने 12 सितंबर 1965 को शहादत का रुतबा हासिल किया. He was awarded the highest military award, निशाने हैदर, on March 23, 1966 for his exemplary courage. और अपनी दिलेराना और जुरतमंदाना हौसले की वजह से, बेमिसाल हौसले की वजह से उनको किस चीज से? हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि बहुत ही बड़ा फौजी एजाज है, निशाने हैदर, उससे नवाजा गया, उससे दिया गया. और वो कब दिया गया बेटा? मार्च 23, 1966 में उनको दिया गया. इन गुजरात में अ हॉस्पिटल वाज आल्सो नेम्ड आफ्टर हिम. उनके नाम का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया, अस्पताल बनाया गया. Several other places, roads and centers were named after him to pay tribute to this brave man. इस बहादुर आदमी को खराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत सी जगहें, रोड्स, सड़कें और सेंटर्स भी बनाए गए. बेटा ये सारा चैप्टर हमें क्या बता रहा है कि जो अपने मुल्क की राह में या अल्लाह की राह में अपने इस्लाम की खातिर जान कुर्बान करते हैं तो वो कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं.
ये है कि हम उनको नहीं देख सकते, हम उनको नहीं जान सकते, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और ये सारे एजाजात इनको दिए गए क्यों? इनकी एग्जाम्पलरी और उसके लिए ट्रिब्यूट पेश किया गया, उस खर्च के लिए। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स। सो टुमारो विद लेक्चर नंबर 1. लेट्स सी टुमारो इंशाल्लाह. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.